film Kinara, sung by none other than but one of the most prolific singers of Indian music industry, Lata Mangeshkar, popularly known as Nightingale of India. She did not just sing these lines for the film, she lived them too. A voice that could move millions to tears, a voice which has resonated in the minds of millions of people across the world. Eras changed, trends changed, but her voice kept on mesmerizing us. She was the voice of divinity, voice of Ma Saraswati, a voice dipped in honey yet charged with emotions. The morning, a sad news came that she left us for heavenly abode, but her eternal voice will be embedded in our hearts till eternity. Let us join our nation and the world in mourning such a terrible loss. Hence, I urge you all to observe 2 minute silence and pray for the departed soul. Eternal rest grant unto her, O Lord, and let perpetual light shine upon her. May her soul, faithfully departed through the mercy of God, rest in peace. Amen. Now, let us start our formal session. Hearty greetings to one and all present here. I presume a member of Unnat Bharat Abhiyan cell of Deshbandhu College. Extend a very warm and heartfelt welcome to all the esteemed personalities and participants who joined UBSL's much awaited webinar themed around legal awareness regarding criminal laws and women's safety. It has always been a tradition to pray to God for a happy start and a smooth end to the program, as prayer calls for humility, a call to self-purification, and a call to introspection. So following our traditions, I would like to invite Sakshi to kindly recite Ganesh Vandana. Over to you, Sakshi. आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी नेत्रों को बंद कर और हाथ जोड़कर गणेश वंदना का ध्यान कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। Thank you so much for that spiritual rendition. May the blessings of Lord Ganesh shower upon us. Legal awareness is the empowerment of individuals regarding issues involving the law. It helps to promote consciousness of legal culture, participation in the formation of laws, and the rule of law. Legal awareness can empower people to demand justice, accountability, and effective remedies at all levels. Robert Kennedy rightly said, "The poor man looks upon the law as an enemy, not as a friend. For him, the law is always taking something away." Unfortunately, India is a country with a large population being poor and illiterate. Majority of people are not aware of the legal systems prevailing in the country and also of their constitutional rights. However, in every position, they have the right of getting awareness. This has been stressed upon by Article 39A by a 42nd Amendment of Constitution in 1976 that states
Legal aid is a constitutional right supported by Article 21 and 39A of the Constitution of India. Access to justice is a basic human right conferred by the common law. Hence, in a quest to familiarize common people with the law of the land and make them feel empowered, such initiative has been taken today by UBSL of Deshbandhu College. Seeing the eagerness of our participants, without wasting much time, I would now like to invite one of the most dynamic and hardworking persona of Deshbandhu College, our own convener of UBSL of Deshbandhu College, respected Professor Dr. Varsha Baveja Ma'am from Department of Geology to kindly address the gathering, introduce our guest speakers, and officially welcome them. Over to you, ma'am. Thank you, Prasun. Good afternoon, everyone. Good afternoon, honorable speakers of the day and dear faculty members and students. I welcome you all to today's event, which is on the theme legal awareness, a pertinent topic in today's scenario, where the entire world is changing due to COVID-19 pandemic. Everything is changed, whether it is education, work, or social interactions. Overall, this pandemic, financial insecurity, stress, and uncertainty has led to increased aggression at home. Reports also confirm that amid COVID-19, many countries have reported increase in domestic violence and intimate partner violence. In India, we take many such actions, including rape in marital relations, as a fate, and don't know that it may be considered as a crime. So I think our speakers can put a light on this. So to enlighten us on laws related to such acts, we have amongst us Advocate Adarsh Singh and Advocate Akash Sharma, and I invite them. First, I invite them. This is Akash Singh, and to share his words of wisdom. Thank you so much, ma'am. I think ma'am was a bit mistaken. I am Akash Sharma, and I think there was some jumble in the words. Sorry. That is okay, ma'am. So I may start now, I think. Respected Professor Dr. Rajiv Agarwal, Principal, Deshbandhu College, UBA Coordinator, Professor Dr. Varsha Bhaveja, faculty members, student coordinators, UBA Unit Deshbandhu College, students and other attendees, my friend and colleague Mr. Harsh Singh. Very good afternoon to one and all. Mera sadar pranam aap sabko. When I was asked to speak on legal awareness on criminal laws by the UBA team, the first thought that came across my mind was, how would I conduct it? किसी को कैसे जागरूक करें, किसी को कैसे बताएं क्या सही है और क्या गलत है, और जो पढ़े लिखे हैं, जो मालूम होने के बाद भी अपने हक की लड़ाई लड़ने से डरते हैं, जो डरते हैं कि क्या इंसाफ मिलेगा भी या नहीं, और मिलेगा तो कब तक, तो क्या इस आशंका में और समाज क्या सोचेगा, इंसान अपना कदम थामे रहते हैं. A very beautiful line said by Sir Martin Luther King Jr. And I quote unquote, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. किसी भी जगह हो रहा अन्याय हर स्थान पर न्याय के लिए खतरा है. The Indian Constitution has endured more than 70 years, yet it is amusing to see how little do we know about it. How little our people know about the basic fundamental provisions of the Indian Constitution, let alone the special acts and provisions that have come across all throughout these years. Today, I'll be enlightening you with some pivotal legal information. My main motive is to educate, encourage, especially the females, with respect to their rights and how to help themselves out when stuck in a situation, possibly a condition, ultimately tormenting their mental peace and stability. Before I plunge into my topic, I would like to brief about rights that our Constitution of India bestows on us, bestows on every individual of the society. The fundamental rights, आपके मौलिक अधिकार.
It is a shocking scenario when you get to learn so many Indians do not even know about their fundamental rights. Right to equality, freedom of speech and expression, right against exploitation, right to work, right to education, right to constitutional remedies. Now, the right to constitutional remedies. Now, it in itself is not a fundamental right, if I may say so, but a way to safeguard your right, a way to directly approach either the High Court or the Supreme Court of India. इस अधिकार के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिए निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करता है विदाउट अ वारंट एंड डज नॉट प्रेजेंट दैट पर्सन बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, कोई कारण नहीं बताता है, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जाता है, उसको हम कहते हैं इलीगल डिटेंशन। पुलिस कैन नॉट डू दिस, द स्टेट मैकेनिज्म कैन नॉट डू दिस। Yet there are many people who are falsely framed and they are known having no idea about the law. They are beholden by such atrocities. A very simple remedy, Article 226, which provides right to file a habeas corpus petition, which can be filed directly before the concerned High Court, seeking release of a person who is illegally detained. 226 ये बहुत बड़ी पावर है। इससे इंसान, सरकार अगर आपको परेशान कर रही है, अगर आपको तंग कर रही है, या फिर सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट जो आपको परेशान कर रहा है, किसी के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तो हम आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट जा सकते हैं। एक जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एक जरिया है जिसमें आर्टिकल 226 के अंदर हम जा सकते हैं। So similarly, there are many dedicated laws that are enacted to safeguard the rights of women. Laws that most of the women belonging to different strata of society aren't aware of. Maybe they are not following it. Now, other than the Indian Penal Code, there is the Dowry Prohibition Act 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, Protection of Women from Domestic Violence Act, जिसको हम DV Act के नाम से जानते हैं अगर हम लीगली बात करते हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, Protection of Children from Sexual Offences Act, पॉक्सो के नाम से हम इसको जानते हैं, लिंगिक अपराध से बालक का संरक्षण अधिनियम 2012, Sexual Harassment of Women at Workplace, Prevention Prohibition Redressal Act 2013, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013. The Indian legislature and judiciary both has worked dedicatedly to form special laws and thereby special courts, Lok Adalat mediation centers to fast track the injustice against women being taken at every place, nooks and corners around the world, around this country. The Indian judiciary, alongside many organizations, NGOs, NALSA, state and legal district service authorities, are connecting to millions of people across thousands of villages to spread awareness with respect to these laws. Recently, Justice UU Lalit, the President of India, Justice D.Y. Chandrachud, Supreme Court, other senior most judges of the Supreme Court, High Courts, they have been in a practice and they are pushing the NALSA, pushing the district legal service authorities to help go to the villages to make sure that people understand their basic legal rights, what is wrong and what is basically they can execute as their legal right. The first thing that I believe is the most important thing is education. Many families in our society are against the idea of women pursuing higher studies. This is not only prevalent in lower income strata of the society, but also amongst the rich. For the ones belonging to lower income group, they reason it out on two factors, such as money is limited, therefore they prefer educating the male child with a hope that the child will take care of them in their old age. And the second reason is girls' wedding, that ultimately, even if they educate them, they'll be married, they'll go to some other place. They believe that educating girls they may not find a suitable groom. And even if they find, they are not allowed to work ultimately. So educating them in hindsight is pointless and waste of money. Right to education is our fundamental right. मौलिक अधिकार जिसको मैंने बोला. Like I said before, it is not gender constrained. This right is available to each and every citizen of India. Only if the females are educated about this right, they can speak for themselves. ये पहला ऐसी चीज है जिसको हमें आगे बढ़ाना है, जिससे हम और आगे चीजों को समझा सकें. Many women do not understand what constitutes as domestic violence, what amounts to cruelty.
बहुत महिलाओं को लगता है कि ये जो हो रहा है ये सही है, ये ऐसे ही होता है, हमने अपने परिवार में ऐसा होते हुए देखा है और उनके आसपास में देखा है, समाज में देखा है, तो क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस है, क्या ये आपके साथ गलत हो रहा है? बहुत सारी महिलाओं को इस बारे में नहीं पता है। क्रूएलिटी क्या होती है और किस किस तरीके की होती है, ये बहुत लोगों को नहीं पता है। Violence against women is a serious problem in India. Overall, 1/3 of women from age 15 to 49 have experienced physical violence, and about 1 in 10 have experienced sexual violence. In total, 35% have experienced physical or sexual violence. Now, this figure translates into millions of women who have suffered and continue to suffer at the hands of the husband and other family members. घरेलू हिंसा जैसे धक्का देना, चाटा मारना, लात मारना, दम घोटना, आपके ऊपर सामान फेंकना, घर के बाहर निकाल देना, किसी भी अननोन जगह पर छोड़ देना, बीमारी में सहायता ना करना, गाड़ी बदतमीजी से चलाना, डंडे बंदूक के बल पर डराना धमकाना, ये कुछ फिजिकल वायलेंस हैं. Apart from these physical violence, there are sexual abuses like criticizing you sexually, insisting on unwarranted or uncomfortable touching, withheld sex and affection, forced sex after physical abuse, wanting you to dress in more sexual way than you want to. Apart from this, there is psychological abuse. It includes behavior that is intended to intimidate and persecute and takes the form of threats of abandonment or abuse, confinement to the home, surveillance, threats to take away the custody of children, destruction of objects, isolation, verbal aggression, and constant humiliation. There are economic abuses, which includes denial of funds, refusal to contribute financially, denial of food and basic needs, and controlling access to healthcare and employment. Now, it's a very very relevant to mention that we do not, as a society, as a whole, we do not consider this as an abuse. But I believe is the most important factor to consider emotional abuse. Continuously criticizing you, calling you names, shouting at you, keeping you away from work, controlling your money, regularly threatening to leave or telling you to leave, manipulating any woman, be it your wife, or for that matter, any other person, with lies and contradiction. All these things seems like a basic lie, a general talk per se, but these affect your mental situation and ultimately amounts to some extent of cruelty. The South Asian Law Review General has mentioned the above data that the data I mentioned to you. Most of the women do not seek help when they are abused. This data has also been assimilated by the South Asian Law Review General 2019. Only 1 in 4 abused women have ever sought help to try to end the violence they have experienced. 2 out of 3 women have not only never sought help, but also never told anyone about the violence. Few abused women seek help from institutional sources like police, medical institutions, social service organizations, and only 2% abused women have ever sought help from police. Majority of women and men say that husband is justified in beating his wife. More than half of women, 54%, and men, 51%, agree that it is justifiable for a husband to beat his wife under some circumstances. Women and most often agree that wife beating is justified when the wife disrespects in-laws. Again, education. Neglect of the house or children is the second most commonly agreed to justification for wife beating both women and men. Section 498A IPC Indian Penal Code explains what amounts to cruelty. आपके पति या आपके ससुराल वाले ऐसा कोई भी काम करते हैं जिससे आपको अपनी खुद की जान लेने या अपने आप को चोट पहुंचाने पर मजबूर कर दिया जाए, या फिर आपसे कोई भी प्रॉपर्टी, किसी भी पैसे या गहनों की गैरकानूनी मांग की जाए, और जैसे कि बातें मैंने आपको पहले बताई हैं कि क्रुएलिटी के अंदर ये जो बातें मैंने आपको बताई सब क्रुएलिटी में आता है. A person who is committing cruelty against you is punishable for up to imprisonment of 3 years. Apart from Indian Penal Code, which provides us law like 498A cruelty, like I said, and 304B, that is the dowry debt. There are several other laws that I recently informed you about. So the Domestic Violence Act, if I start with,
It seeks to cover women who are or have been in a relationship with the abuser, where both parties have lived together in a shared household and are related by consanguinity, marriage, or a relationship in the nature of marriage or adoption. In addition, relationship with family members living together as a joint family are also included. Even those women who are sisters, widows, mothers, single women, or living, which are entitled to get legal protection under this act. This act provides for the woman's rights to live in marital or joint household. Whether or not she has rights in the household, this right is secured by a resident order which is passed by the court under Section 19 of the DV Act, Domestic Violence Act. The act provides appointment of protection officers and NGOs to provide help to the women with respect to the medical checkup, legal aid, safe asylum, etc. Section 18 of the DV Act provides the one I said. The custody of the child under Section 21, monetary relief for husband, ex-husband under section from ex-husband and husband under Section 20, and compensation, other compensations under Section 22 of the Domestic Violence Act. One say there are rights, but how do we access them? Rights तो सरकार ने, हमारे लेजिस्लेचर ने, जुडिशरी ने बना दिए, इनको एक्सेस कैसे करा जाए? तो इन्हीं एक्ट के अंदर ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं, सेक्शंस हैं, जो कि हमें बताते हैं कि इनको कैसे एक्सेस करा जाता है. सेक्शन 5 ऑफ डीवी एक्ट जो हमें बताता है, इट प्रोवाइड्स दैट द ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर एंड मजिस्ट्रेट टू इन्फॉर्म अग्रीव्ड पर्सन ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज of the protection officers of a right for free legal service under the Legal Service Authorities Act. They have a right to file the complaint under Section 498A. Section 6 and 7, it provides for duties of shelter home and medical facilities. किसी को shelter home की जरूरत है, किसी को medical facility की जरूरत है, तो वो पुलिस में जाकर, मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपनी समस्या बता सकता है और ये सब रेमेडी सीख कर सकता है. इसके अलावा सेक्शन 125 सीआरपीसी, 125 सीआरपीसी एक लॉ ऐसा सेक्शन है जिसमें बेटा बाप से और बाप बेटे से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकता है, और अगर दोनों में से कोई भी असमर्थ है किसी कारण, या फिर पति पत्नी से, माँ अपने बच्चों से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं. हम एक थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक पर आएंगे, इज कॉजिंग मिसकैरेज, जोर जबरदस्ती से बच्चा गिराना. ऐसा करने पर 3 साल की सजा और जुर्माना है. There are many females who have undergone forced miscarriage. Many times they go through multiple miscarriage in order to bore a male hair for their family. A number of families before the actual birth of the child got the child's sex determined through unfair means, and they make a decision regarding the birth of the child. This is why sex determination through sonography was banned and now is illegal. Females who have undergone this process are victims of anxiety, depression, fear, assault, harassment, weakness, and a lot of other emotional aspects. Now, instead of rejoicing the joy that they are getting pregnant, they are having a child, they live under constant fear of forced miscarriage. Multiple miscarriage leads to extreme weakness, fragility, and lowers the strength of carrying a healthy pregnancy and possibly death. Indian government has implemented various laws and acts to safeguard these women, but females aren't aware of it, like I said. Only if they are made aware, they can take resources to it. Everything will seem to be elusive in reality. For example, when a woman gets married, she is expected to get some dowry. Many times the dowry she got was lesser than expected. Thereafter, she is forced to get more from her parents. She is treated badly, assault is exerted, and she feels helpless. If she is made aware about the provision, she can stand up for herself, or reach out to people who can help her out. Now, the second question which arises is whom to reach out? Who will help such females? Where to find them? Now, this is a big question and doubt for them. Therefore, along with the rights, the concept of legal aid must be talked about in greater detail so as to make them feel empowered and fearless. Legal aid, there are, to be very candid to all the guests and the attendees, if one fears law, if one fears what will happen in future, they will not be able to execute it. So the first thing is to educate yourself and take some steps. Now, moving on from this, I will talk about another very sensitive topic. It's POCSO Act. The broad spectrum definition of what constitutes a sexual offense against a child. It could be male or female.
It further expands the definition of sexual assault to cover both penetrative, non-penetrative, and aggravated penetrative sexual assault, covers under section 3 to 10 of the POCSO Act, and is also inclusive of penalties for those in position of trust, public workers, educational personnel, and police officer. इनके against में भी ये लागू होता है. The POCSO Act also established measures to make criminal justice system more child-friendly and to provide re-traumatization. जब बच्चे को झटका लगता है, उनको डर लगता है, मन में बात बैठ जाती है, जिसके कारण उनका फ्यूचर में काफी सारी चीजें जो होती हैं वो निर्भर होती हैं और उसका असर उन पर पड़ता है आगे उनके सोच विचार में, उनके कोई भी कदम उठाने पर. इस सब को ध्यान में रखते हुए बच्चे को कैसे इस सब चीजों से बाहर निकाले, ये सरकार प्रोवाइड कराती है. This includes everything from how the statement of the child should be recorded, to the medical examination, to the designation of special child-friendly courts. Alok Srivastava versus Union of India, 2018. The Honorable Supreme Court issued guidelines to be followed by special courts while trying a case under the POCSO Act 2012. So the trial is completed within a period of 1 year from the date of taking cognizance of the offense. तो ये अगर विचार है, सोच विचार है कि ये हमारे घर में ही किसी ने हमारे बच्चे के साथ ऐसा कर दिया है और अंजाम क्या होगा, सोशली लोग क्या सोचेंगे, क्या रिस्पॉन्स रहेगा इसका, और कब तक समय लगेगा, हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, कब तक सहेगा. सरकार 1 साल के अंदर इन केसेस को समाप्त करने का, इन केसेस को डिस्पोज ऑफ करने का समय निकाला है. सोशल कंस्ट्रेंट एंड फियर, जैसा मैंने आपको बताया, key part is to understand your children. Children are assets of the country, and therefore the need of the hour is to protect and nurture them. The society in which we are cohabitating has different types of people. Children of our country must be taught as to what accounts for a good touch and what exactly is a bad touch. माँ बाप को अपने बच्चों से खुलकर बात करना चाहिए कि क्या गलत है, क्या सही है, कि इस तरीके से छूना सही होता है, कि इस तरीके से कोई आपको छूए वो सही है या गलत है. This teaching has to be imbibed in the most simplest and sensitive manner, so that they are good enough to judge and understand it. They must be taught that touching of pivotal parts is not acceptable at all. And if they happen to witness such a view or they face it themselves, then immediately they must inform their parents, teachers, or any elder. These elders must take out time for their kids every day and talk to them about their whole day, what they have done all throughout. Parents should have an eagle eye and spot any hesitation they come across their child. Sometimes children are aware because their innocence and age, they don't know what is happening to them and what exactly they are undergoing. Therefore, it makes it even more important to understand and talk to their children so as to eradicate such people from their child's life or take action against such people. The parents must not shy away from talking about such topics. Instead of talking about in great lengths, so that the children don't shy away in future about telling any such incident, as one never knows whose child might be subjected to such abuse. Parents can approach police or social workers and seek help from their child or anyone who needs such help. They must not ask the child to remain quiet or to not to tell it anyone. They should not shun the voice and troubles of their child. Instead, speak to themselves about it. Ask them what is happening. Take them in confidence and take correct steps for their children. This was the POCSO Act, which is the sexual offenses against children. Now, moving on to this, a very I may call it new, though it is not new, is sexual offenses, or you may say offenses against women at workplaces. The subject is not new. It has been happening all throughout. There are issues with this. Educated women themselves, because of the fear of society, this male patriarchal, if I can say so, dominance. They are objectified, subjectified, and they do not speak. Honorable Supreme Court in Vishakha and others versus State of Rajasthan issued several guidelines in 1997 regarding sexual harassment at workplace, physical contact or advances, a demand or request for sexual favors, sexually colored remarks, showing pornography,
any other unwelcome conduct, whether it is physical, verbal, or non-verbal. These four things, they comprise of sexual harassment at workplace. The Honorable Supreme Court has directed for the formation of Complaint Redressal Committee, Internal Complaints Committee, wherein the name of the victim remains unnamed. And moving on from this, even the High Court, even the Supreme, the name of the victim remains unnamed, which one must know, because that is the primary fear. What will the society think? The important feature of the act is that it envisages the setting up of internal complaints committee, like I said, at every office of the organization or institution, having more than 10 employees to hear and redress complaints pertaining to sexual harassment. Now, where there are numbers less than 10, the act provides for setting up a local committee in every district by the district officer. The committee, while inquiring into such complaint, shall have the same power vested in the civil court. Delhi High Court, in its judgment in Ruchika Singh Chabla versus Messrs. Air France India and another, directed that the ICC should be constituted in strict compliance with the requirements under law. So if someone thinks that it will be casual, they won't take the complaint seriously, it is a wrong assumption, and they should deviate from that. Now, in case of a domestic worker, the local committee shall, if prima facie case exists, forward the complaint to the police within a period of 7 days for registering the case under section 509 of IPC or any other relevant provision of the said code regarding the offense. The committee has to complete the inquiry within a period of 90 days. Even though the act is in force since 2013, the awareness regarding consequences of sexual harassment and its redressal are somewhat limited. The effective implementation of the POSH Act not only requires creating an environment where women can speak up about their grievances without fear and get justice, but sensitization of men towards treatment of women at workplace is equally necessary. How to conduct yourself as a man. Moving on to this, I must talk about what we actually are here for, the legal aid. Prasoon, when he started with it, he talked about Article 39A. Article 39A of the Constitution of India provides the state shall secure that the operation of the legal system promotes justice on the basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable legislations or schemes or in any other way to ensure that the opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disability. In every state, State Legal Service Authority has been constituted to give effect to the policies and directions of the NALSA, that is National Legal Aid Service Authorities, and to give free legal service to the people, conduct lok adalats in the state. The State Legal Service Authority is headed by the Honorable Chief Justice of the respective High Courts of the states, who are the patron-in-chief of the State Legal Service Authorities. In every district, District Legal Service Authority has been constituted to implement legal service programs in the district. The District's Legal Service Authority, DLSA, is situated in the district court complex in every district and chaired by the district judge of the respective district. You can file a complaint to the district judge if nobody is listening to you. Now, this nobody as a lawyer will educate you or will tell you to do that. But अगर आप पर आती है तो आप हाथ पैर चलाते हैं. तो अगर आप पुलिस में गए हैं, पुलिस ने आपकी बात नहीं सुनी. आप मजिस्ट्रेट के पास गए, मजिस्ट्रेट ने आपकी बात नहीं सुनी. आप जज के पास जा रहे हैं, जज ने आपकी बात नहीं सुनी. आप मिनिस्ट्री में कंप्लेंट करते हैं, मिनिस्ट्री ने आपकी बात नहीं सुनी. आप इंटरनेट पर जाते हैं. आजकल लोग क्या क्या नहीं करते हैं. तो रास्ते जरिए बहुत हैं, बस डर जो मन में हमेशा बैठा रहता है. Illiteracy, it is another major obstacle to the legal aid. Now, it is common knowledge that about 70% of the people living in rural areas are illiterate, and even more than that, they are not aware about the rights conferred upon them by the law. It is the absence of legal awareness which leads to exploitation, deprivation of rights, benefits of the poor. One can talk about law and right, which could go on for hours and hours, and the key is to pursue the remedies as made available under the under the Constitution. I hope my endeavor brought some insight to help acknowledging the same. We often question ourselves and others regarding the purpose of law. Most imperatively, the purpose of law is to give justice. It is the spirit of law that keeps the justice alive. With this, I am grateful and thank you for all of you
to take your time out and put forth effort to bring out such a great endeavor. Thank you. Thank you so much, sir, for your words of wisdom. Your effective presentation helped laymen like us to understand intricacies of law in a simplified manner. Thank you so much for that. Now, we are gearing ahead for another power-packed presentation on the theme by such a nice and knowledgeable personality. For this, I would like to invite our second esteemed guest of today's session, respected advocate, Harsh. Sir, over to you, sir. Sir, you are muted. Yes. Yeah, hello. Am I audible now? Yes, sir. Yes. आप सबको नमस्कार मेरी तरफ से. And my learned friend Akash Sharma, truly speaking, your speech was very good. And I agree with you that in India, laws are made, but many of us are not aware of it. So I appreciate the initiative taken by UBS Cell. That they are indulging in these activities for legal education to all the people. आकर्ष ने जो मतलब we are मतलब same, we are colleagues only, and he has discussed everything for the legal things for against the criminalities against women जो हो रहा है, हम लोग देखते हुए आ रहे हैं. बस यही एक है कि लीगल एजुकेशन जो लोगों को जागरूक कर सकता है इन सब चीजों में. जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, रेप हम लोग नहीं अवॉइड कर सकते. मतलब ये भुला नहीं सकते कि इसके लिए कितना एजुकेशन चाहिए, लोगों को कितनी समझ चाहिए, क्या क्या राइट्स है वुमेन के पास. मैं अगर रेप का नाम लिया है तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा रेप से अपना ये प्रेजेंटेशन. एक सेक्शन 375 सबको पता है, इंडियन पीनल कोड. बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मतलब सबको आइडिया नहीं है इन सब चीजों का, जीरो एफआईआर. जीरो एफआईआर का मतलब है कि मतलब ये रेप कहीं और हुआ, आप कंप्लेन कहीं और कर सकते हैं. आपको जरूरत नहीं कि आप अपने जुरिस्डिक्शन में ही जाके कंप्लेन करें. कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया आप कंप्लेन कर सकते हैं. पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपको दिखे. आप रहते, अगर हम दिल्ली का एग्जांपल है, आप रहते पश्चिम बिहार में, लेकिन रेप एक्टिविटी जो हुई मेहरौली के पास हुई, तब वसंत कुंज के पास जाइए, आप कराइए कंप्लेन. या फिर आप पश्चिम बिहार जहां पे आप रहते हैं वहां पे कंप्लेन कराइए. दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. जीरो एफआईआर बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आजकल ये लोगों को पता होना चाहिए कि जीरो एफआईआर. लॉयर्स को पता है, टीचर्स को पता है, लेकिन जो आप जैसे लीगल एड सेल वाले हैं, आप लोगों को भी ये इसका आइडिया एक होना चाहिए कि क्या है जीरो एफआईआर. फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट. आप कंप्लेन कराना जा रहे हैं रेप, आप रेप विक्टिम है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट आपका होना चाहिए. एंड राइट्स हैं आपके. मैं आप कुछ राइट्स डिस्कस कर रहा हूँ. कंपनसेशन आप क्लेम कर सकते हैं रेप का, जो कंपनसेशन है. एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज, राइट टू प्राइवेसी. जैसे आकर्ष ने इस बात करी थी, राइट टू प्राइवेसी रेप विक्टिम की. एक केस है निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में था ये केस. एंड इसमें रेप विक्टिम की आइडेंटिटी वो निकलनी नहीं चाहिए. मतलब कहीं पे भी न्यू मीडिया को मना कर दिया था. मतलब इस केस के दौरान ये रूल लाया गया कि आइडेंटिटी नहीं निकलनी चाहिए रेप विक्टिम की. सो इसका एक बहुत बेहतरीन राइट निकाला हमारे जुरिस्डिक्शन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रेप विक्टिम के लिए, कि आप इन कैमरा प्रोसीडिंग कर सकते हैं. आप भरी कोर्ट में आप रेप विक्टिम को नहीं लाके आप सवाल जवाब या आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं हमारे में, नहीं कर सकते. इन कैमरा सिर्फ जस्टिस, एडवोकेट और विक्टिम इन कैमरा में होंगे. एक ये हो गया. और आप जो पुलिस को स्टेटमेंट देनी होती है, आप पुलिस को स्टेटमेंट नहीं दे सकते, आप सीधा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को स्टेटमेंट दीजिए जाके. वो भी एक लेडी ऑफिसर आपके साथ रहेगी. विक्टिम का प्राइवेसी बहुत ज्यादा जरूरी है. इसी से रेप वाले जिनका विक्टिम है ये कंप्लेन्स करेंगे. बहुत लोग होते हैं जिनके घर वाले दबा देते हैं कि अगर रेप हुआ है तो कोई बात नहीं, संभाल लो, घर पे ही रह लो. ये नहीं, हर चीज का कंप्लेन बहुत जरूरी है.
बहुत जरूरी है। अब रेप की बात करिए तो हम रिसेंट न्यूज में आपको एक डिस्कस करना चाहूंगा। हमारे इंडिया में लॉज बहुत अच्छे हैं, बहुत, अगर इसको यूजफुल वे में आप करें तो काफी सही है हमारे इंडिया के लॉज। हमें लॉ हाथ में नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मैं एक रिसेंट एग्जांपल, यूपी में एक सोल्जर मैन ने, उनकी बेटी का रेप हुआ था, 16-year-old गर्ल, एंड 25-year-old मैन ने उनका रेप किया था एंड असॉल्ट किया था। तो कोर्ट के बाहर एक सोल्जर मैन ने उस आदमी को शूट कर दिया, मार दिया। ये नहीं, प्रॉपर प्रोसीजर्स आर देयर दैट हैज टू बी फॉलोड। लॉज है, हमें घबराना नहीं चाहिए। लॉज आर फॉर द पीपल। लोगों को लगता है कि लॉज एनिमी है, वो उनसे छीन लेगी बहुत सारी चीजें। नहीं, लॉज उनको ही बचाएगी, उनके ही हक में लड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें आता है लीगल एड, जो आकर्ष ने अभी डिस्कस किया। लीगल एड सेल हो या फिर लीगल एड जितना भी हो, नालसा या DSLSA, दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसका एक हेल्पलाइन भी है 1516। मैं प्रॉपर दिल्ली की बात करूंगा, अगर हम लोग दिल्ली के ही हैं तो सारे दिल्ली के ही अगर बात करूंगा मैं, तो लीगल हेल्पलाइन है 1516। आप इस पे जाकर, ये स्पेशली मतलब वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, इस पे बिलीव करता है लीगल एड सेल हमारा दिल्ली का, स्टेट का है अगर देखा जाए तो इसमें बेसिकली अ वुमन और अ चाइल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर, एनुअल इनकम जिनकी 9,000 से कम है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम, ह्यूमन, ये भी काफी इसके केसेस आ रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एसिड अटैक्स, इन सब के काफी केसेस हम देखते हैं। मैं जैसे सुप्रीम कोर्ट में वी हैव स्टार्टेड वर्किंग इन सुप्रीम कोर्ट, देयर आर मेनी केसेस ऑफ एसिड अटैक्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिनकी जो बच जा रहे हैं वो कंप्लेन कर दे रहे हैं, आधों को पता ही नहीं कंप्लेन कैसे करनी है, क्या करनी है। जो गरीब हैं उनको पता ही नहीं है क्या कंप्लेन क्या है। दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट के Sir, we could not hear you. Sir, you are muted. अब आ रही है वॉइस? Yes, sir. सॉरी, आई एम रियली सॉरी। एक आ गया था इसमें स्काइप का कॉल फ्रॉम द क्लाइंट्स ओनली। संडे है, सब फ्री ऐसे ही रहते हैं। डिस्कस कर रहा था दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसके बारे में। तो अपना इसमें क्या है, हमें ये इस पे आता हूं कि कौन कौन इसकी कमिटी बैठती है। चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, पैट्रन इन चीफ होंगे इसके, और रिटायर्ड जस्टिस या फिर सर्विंग जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, जो फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में हमें जानना, हम अगर हम लोग लीगल एड सेल वाले जानेंगे तब हम लोगों को बता पाएंगे। जो यूबीएस सेल काफी बेहतरीन तरीके से करता है, प्रोवाइड करता है लीगल एजुकेशन टू ऑल द पीपल इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोगों को यहाँ नहीं पता है, दिल्ली विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2018, ये एक विक्टिम्स कंपनसेशन स्कीम है जो हर एक लीगल एड सेल वालों को पता होनी चाहिए। अगर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप विक्टिम हो, कभी आप सबके साथ ये सिचुएशन भी ना आए, लेकिन इफ यू आर अ विक्टिम and you can claim a compensation from your state authority. इसमें आपको क्या है कि आपको कोर्ट का ऑर्डर, जजमेंट, FIR, मेडिकल रिपोर्ट या फिर डेथ सर्टिफिकेट इन केस अगर है वो सबमिट करनी है। तो मैं आपको कंपनसेशन बता दूं, रेप विक्टिम के लिए 4 लाख से 7 लाख रुपीस, एसिड अटैक विक्टिम के लिए 7 लाख से 8 लाख रुपीस, लॉस ऑफ लाइफ हो गया, अनसर्टेन सिचुएशन है, 3 लाख से 10 लाख रुपीस, सेक्सुअल असॉल्ट जो आए दिन लोग कंप्लेन नहीं कर रहे लेकिन बहुत हो रहा है, 2 लाख से 5 लाख रुपए का कंपनसेशन आप क्लेम कर सकते हैं। एंड एक और है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड किडनैपिंग, दिस इज 1 लाख to 3 लाख रुपीस।
यू कैन क्लेम दिस फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये आप दिल्ली विक्टिम कंपनसेशन एक है, ये आपको क्लेम अमाउंट देता है। इनके पास एक पूरा कंपनसेशन फंड क्रिएट किया जाता है, जो कोर्ट के कॉस्ट, जो कोर्ट डेली हेयरिंग कॉस्ट होती है, उन सब से जमा किया जाता है, एंड स्पेशली ये दिया जाता है जो विक्टिम्स है। तो इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। विद इन 3 days आपका ट्रांजेक्शन शुरू हो जाता है, एंड 80% 1 month में आ जाता है, 20% आपके फिक्स डिपॉजिट में रखा जाता है बैंक अकाउंट में, नेशनलाइज्ड बैंक अकाउंट में। एंड सब जानते हैं, अभी रेप डिस्कस हो चुका है, तो मैरिटल रेप सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी विवाद में चल रहा है। अगर हम लीगल न्यूज देखा जाए तो ये दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस राजीव शक्दर एंड सी हरिशंकर के उस पे चल रहा है, बेंच पे, डिवीजन बेंच बोलते हैं इसको। फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द वाइफ, दिस इज कॉल्ड मैरिटल रेप। जल्दी इसका डिसीजन आएगा, होप सो। हम भी बहुत अच्छा अमेंडमेंट चाह रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो काफी जोरों शोरों से पिटीशन इसमें डली हैं, 5 से 10 पिटीशंस डली हैं फॉर द मैरिटल रेप। एंड डोमेस्टिक वायलेंस पे अगर मैं आऊं तो आकर्ष ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं ये डोमेस्टिक वायलेंस। सो इसमें एक चीज बस मैं थोड़ा बहुत चीज बताना चाहूंगा। आप वुमेन है अगर जिसके साथ हो रहा है ये वायलेंस, डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन फाइल कर सकती है अंडर सेक्शन 12 में। डायरेक्ट आपके जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है आपके ज्यूरिसडिक्शन में, मैजिस्ट्रेट को आप एप्लीकेशन दीजिए, ठीक है। वो पुलिस ऑफिसर या प्रोटेक्शन ऑफिसर से बोलेगा कि मेरे को इसकी रिपोर्ट दीजिए, डोमेस्टिक वायलेंस इंक्वायरी रिपोर्ट बोलते हैं इसको, जो ये प्रोटेक्शन ऑफिसर आपके एरिया का देता है मैजिस्ट्रेट को। फिर मैजिस्ट्रेट ऑर्डर्स दे सकता है एक्स पार्टे। एक्स पार्टे आप जानते हैं कि आप वाइफ हैं, आप कोर्ट गए, आपके हस्बैंड के होने की भी जरूरत नहीं है कोर्ट हियरिंग में। एक्स पार्टे अगर कोर्ट को लग रहा है कि हाँ आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो जरूर वो एक्स पार्टे ऑर्डर देगा प्रोटेक्शन के। प्रोटेक्शन मतलब आपको अपने रिलेटिव हस्बैंड से प्रोटेक्शन चाहिए, कंपनसेशन अलग तरीके का, हर जगह का, मेरे को मारा है, इंजरी डैमेज हुआ है तो उसका कंपनसेशन। रेसिडेंस ऑर्डर, रेसिडेंस ऑर्डर है कि आप अपने पति के साथ ही हाउस होल्ड शेयर कर सकती हैं, एंड कोर्ट का ऑर्डर है कि पति आपके रूम में नहीं आएगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना उसके रिलेटिव्स। हाउस होल्ड आप शेयर कर सकती हैं एज अ वाइफ। एंड मेंटेनेंस एंड कस्टडी ऑर्डर, मेंटेनेंस हर महीने का आपको कुछ खर्चा, एंड कस्टडी, चाइल्ड की कस्टडी किसके साथ, ये। एंड पनिशमेंट भी है काफी इसमें, 3 साल और फाइन डोमेस्टिक वायलेंस में पति के अगेंस्ट। बस डोमेस्टिक वायलेंस यही कहूंगा कि मैं, जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस जहां लैक करेगी वहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फिर फायदा नहीं है। एक अलग क्रिमिनल है, अगर हम क्रिमिनल एक्टिविटी देख रहे हैं तो इफ यू आर सीइंग इट, यू आर वाचिंग इट, स्पेक्टेटर हो आप, सो यू आर अ विटनेस टू इट। एंड विटनेस के लिए भी दिल्ली विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 है। अगर आपको लग रहा है आपके ऊपर खतरा, आप विटनेस हो उस केस में, तो आप अपने कोर्ट को, लोकल ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट है उसमें आप इन्फॉर्म कीजिए, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। एसएचओ विद इन 2 days या 1 day आपके घर के आगे पेट्रोलिंग शुरू कर देगा, ईमेल्स, आपके फोन सब चेक करेगा। विटनेस का भी बचाव होना बहुत जरूरी है अगर जस्टिस चाहिए हमें, तो कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी के अगेंस्ट। ये एक फाइट है जो हम सब लड़ रहे हैं। काफी वी आर लर्निंग, हम लोग भी अभी लर्न कर रहे हैं काफी चीजें। सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अस द अपॉर्चुनिटी, काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस हम लोग देख रहे हैं, एंड जो सीख रहे हैं हम लोग, एंड वही मैं डायरेक्ट, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, मैं ना एक्ट पढ़ के बता रहा हूँ, ना मैं टीवी पे मूवीज के आगे उसमें बता रहा हूँ। ये चीजें हमने सुप्रीम कोर्ट में देखी हैं, चाहे लाइव हियरिंग, वर्चुअल हियरिंग पे देखी हो, चाहे लाइव कोर्ट में जाके देखा हो, किसकी बेंच में देखा हो, ये हमने चीजें देखी हैं। और ये सब एप्लीकेबल है, जो एक लीगल एड सेल जैसे यूबीए काफी जागरूक है आप लोग को करने का, आप लोग का काम है। तो आई रियली अप्रिशिएट एंड आई थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी हमें कि हम हमारी लर्निंग्स हम शेयर कर सकें ताकि आप लोगों तक पहुंचाएं। एंड श्योरली वी विल बी प्रेजेंट। अगर आप लोग कोई
मतलब ऑन फील्ड काम करते हैं लीगल एजुकेशन के लिए, तो हम लोग उसके लिए भी प्रेजेंट हैं एंड श्योरली हम लोग उसके लिए भी आएंगे. थैंक यू सो मच. नमस्कार. Thank you so much, sir, for your excellent address. Your golden words have definitely expanded our horizon of thinking about the basic structure of law and legal system in India. Gearing for a question and answer session, I'm sure that our curious joiners would like to ask questions that are pinching their brains and clear their doubts. So I request you all to please drop your questions or queries in the chat box, if there are any. Till these questions are coming, I just want to say thank you so much, Akash and Harsh. It's really a wonderful talk. Thank you. And Thank it you is so the- much, it ma'am. is the- Thank you so It is much, the ma'am. need of the hour, basically. Absolutely. Because many of us, because we fear going to the court and Yes, because ma'am. of, Yes, I understand that. हाँ, क्योंकि इतना Understand. लंबा प्रोसीजर होता है ना मैम कि हर कोई एक डरता है कि हम क्यों जाए. भाई, एक तो आपकी आइडेंटिटी का बेसिकली होता है और पुलिस भी आपको हैरेस करती है, बिल्कुल कोर्ट भी आपको हैरेस करती है. इतनी अब बार नहीं करेगी मैम. अब पूरे रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो गए मैम मैम कॉन्स्टिट्यूशन. I understand it is a tedious process. People हाँ. are in apprehension that it will take time, so much time, कि जस्टिस मिलने का भी कोई मतलब नहीं है कि अब मिल भी गया तो हम उस जस्टिस का क्या करें. ये एक हाँ, फियर रहता है, सोसाइटी का जैसे फियर रहता है. निर्भया में इतना लंबा चला, आप देखो. बिल्कुल. हाँ हाँ मैम. हाँ. ये कुछ केसेस हैं जो हमारे दे चेंज द लीगल हिस्ट्री ऑफ आवर नेशन. ये कुछ केसेस थे जिन्होंने दिला दिया एकदम. हमारा कॉन्शियस, हमारा माइंड जो है कॉन्शियस है एकदम 360 था, 360 घुमा दिया उसको, वापस वैसे ही आ गया और हम बिल्कुल नहीं समझ पाए हुआ क्या. लेकिन आफ्टर दिस देयर वर लेजिस्लेशंस दैट वर पास्ड. द पुलिस इज स्ट्रिक्टर. जैसा हर्ष ने बोला, देयर इज अ विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम. The only thing is the time that is the amount of time that it takes. True, it takes a certain amount of time, but I believe that one should not, because of this apprehension that it will take so much time and they are not taking any legal step. That is the first primary thing. Like I said, education. If you educate yourself, fear एक चीज है कि क्या हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे. अब वही सोच में अगर हम कुछ नहीं करें तो ऐसा हिसाब से तो फिर हमें पढ़ाई लिखाई भी नहीं करनी चाहिए, आगे कोई और काम भी नहीं करना चाहिए. सीनियर एडवोकेट मीनाका गुरुस्वामी, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने केस फाइल करा, केस जीता और 377 जिसको हम बोलते हैं एक होमोसेक्सुअलिटी, जिसका हमने ये हमारे यहाँ लीगल कर दी. अब ये कितनी बड़ी बात थी, वो बहुत हिम्मत की बात थी एक फीमेल लॉयर होकर उस चीज को क्लेम करना, उस चीज पर लड़ना. इस्मत चुगतई पाकिस्तानी राइटर हैं, उन्होंने लिहाफ द क्विल्ट करके किताब लिखी थी जो मैंने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ी थी. उस किताब में 1950 में होमोसेक्सुअलिटी के बारे में जिक्र करा था एक पाकिस्तानी राइटर ने. बहुत ज्यादा शोशाबाजी हुई थी इनकी, बहुत इनके खिलाफ धरना हुआ था और बोला गया था कि मतलब किस तरीके की किताब है. उस जमाने से लेकर 2017 कितना समय बीत गया, लेकिन अब जाके एक लॉ बना. बट अगर ये स्टेप तब अभी भी नहीं उठता तो शायद एक लोगों के माइंड में ही रहता. मैं समझता हूँ घर वाले बड़े बुजुर्ग होमोसेक्सुअलिटी को नहीं समझते हैं, वो समझते हैं एक बीमारी है, एक मेंटल प्रॉब्लम है, और किसी की भी सोच को हम एकदम डंडे के जोर पर हम ठीक नहीं कर सकते. बट हम दूसरे को समझ सकते हैं क्या वो फील कर रहा है. जैसे कि छोटे बच्चे का, मैंने पॉक्सो के अंदर आपको बताया था कि एक छोटे बच्चे के साथ अगर कोई छेड़छाड़ी करता है तो अगर हम सेंसिटिव होंगे तभी हम समझ पाएंगे कि मन के अंदर क्या बात है, क्योंकि इंसान सिर्फ एक शारीरिक रूप से इंसान नहीं है, इंसान मन से भी एक इंसान है. that is one major thing which we should understand about child offenses related to homosexuality and offenses with respect to women. And I think we should understand, because homosexuality is not a new, it is given in our mythological scriptures also. Absolutely. Yeah. So it is mentioned over there also. Yes, definitely. Yeah. A lot of ministries. मैम प्रॉब्लम बस यही सॉल्व होगी हर चीज की हमारे पास, बस लोग कंप्लेन करें.
हाँ क्योंकि रूल्स एंड स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, पुलिस के लिए भी, अपने जुडिशरी के लिए भी, हर चीज अगर स्ट्रिक्ट हो गए हैं, बस इसका लोग फायदा ना उठाएं। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में भी हम देखते हैं फेक केस लगा देती है वुमेन, हाँ हाँ, है ना वही मैम? प्रोस एंड कॉन्स है, हाँ, बिकॉज तो वी वही आर है मैम, गिविंग हर चीज एडवांटेज। के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बस हाँ हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि डरे ना हम लोग सिचुएशन से। हाँ हाँ चलिए क्वेश्चंस आ रहे हैं मैम, हम हाँ लोग डिस्कस कर लेते हैं ये। So we have few questions raised by our participants. Sir, I would like to request you to please shed some light on these queries and answer their questions. So our first question is from Shruti Ratolia. She is asking how to ensure that the complaint is genuine and the law is not misused by anyone in the society. See, that is the part of the investigating officer. IO जिसको हम बोलते हैं, the IO he makes sure that the investigation is fair. The IO files the charge sheet. That charge sheet is it goes to the magistrate. उस पर charges frame होते हैं and then the trial starts. अभी तक इसको इस ऐसे व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट ये सब हुआ है उसको हम अक्यूज्ड बोलते हैं, क्रिमिनल नहीं बोलते हैं, अक्यूज्ड बोलते हैं। जब ये ट्रायल होता है, ट्रायल कंडक्ट होता है और जब ऑर्डर आता है तो इफ ही इज कन्विक्टेड तब हम उसको बोलेंगे कि ही इज द कन्विक्टेड पर्सन, ही हैज डन द क्राइम, ही इज द क्रिमिनल। उनको रिहा कर दिया जाता है तो वो ना ही वो अक्यूज्ड तो हम चलिए एक नॉर्मल वर्ड है दैट he was arrested under so and so provisions because of the so and so crime that has been alleged onto him, but whether he is criminal or not or she is criminal or not, that is for the court to decide. So a complaint is genuine or not, there are very many factual circumstances. For example, there are women who, you know, for the sake of they if I can say so, like if they are having an affair, they do not want to live with their husband, or possibly their parents forcefully married them to this person, and now the only thing that they have is you know, to seek divorce. The divorce will take time. Also, what reason she will give. So what they do is they file a complaint he has pursued domestic violence, his family members have pursued domestic violence under 498A cruelty. Now, if you take over the holistic view, it is very difficult in these circumstances to collect the evidences. How will we collect evidences? What has happened within the four walls? It is very difficult to understand, to know who is lying and who is not. So a keen knowledge of the facts. That is why these cases are firstly they are sent to Lok Adalat, mediation centers, so that in our culture as a whole, we first of all reconcile, we talk to each other, and even if it does not happen, then we pursue for divorce. So it is very difficult to understand if we talk about the domestic violence cases that which complaint is genuine, which complaint is not. But the court takes a very you know, a very sensitive not if I can say so, a very sensitive view in these things. They do not take it as a criminal per se action. It is a pseudo criminal, civil criminal action. So to say that it is genuine or not, it is very difficult to talk about it right now. But yes, it is a pseudo criminal thing. Nobody is you know, nobody is going to the prison in a short way just on the basis of a complaint. There is investigation and there are evidences, and then there are admissions and denial of those evidences, and ultimately the judgment. So but one must make sure that you know, being the male member of the society, that they have to understand there are rights of women as well. If I want to go to work, what if my wife wants to go to work? Then if she wants to go to work, then I cannot stop her from going to work. It is our mutual understanding. I don't know if I answered you correctly or not, and that is it's Prasun, there Yes. was a question that Anshul, one of the candidate, Yes, sir, the I'm student coming to asked. that. I'm Yeah, coming yeah, to yeah. that, sir. So thank you so much. I hope this would have satisfied Shruti. So our next question is from Shekhar Vashisht.
Sir, he's asking, do we need any certification for spreading awareness regarding legality in our society? I No, believe, no, is no, this a no. joke? Is this a joke? No, no, no. If you are understanding any bit of law, you should explain to people. It will help many people, especially in rural areas. See, if you know your law, if you know your fundamental rights, then you should tell it to everyone. Focus on your fundamental rights and duties. It is like Focus. कि Do focus. आप थैंक यू मत बोलो, किसी की सहायता कर दो और उनसे बोलो कि वो 3 लोगों की सहायता कर। कोई डायरेक्टली क्वेश्चन पे आता हूँ, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर आप लॉ की डिग्री लेना चाहते हैं तो उसके लिए पढ़िए, फिर सर्टिफिकेट कोई नहीं चाहिए अवेयरनेस फैलाने के लिए। Thank you so much, sir. So we have our next question from Anshul. He's asking, what is your view on criminalizing marital rape? बिल्कुल होना चाहिए। मेरा तो डायरेक्ट आंसर है इसमें, बिल्कुल होना चाहिए क्रिमिनलाइज, क्योंकि मैं अपना टेक बता रहा हूँ, आकर्ष का शायद से अलग हो, मैं अपना बता रहा हूँ। कंसेंट एक वर्ड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसेंट जहां नहीं है, फोर्सफुल आ गया इसमें वर्ड, फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट इज मैरिटल रेप विद वाइफ, तो इसको क्रिमिनलाइज होना चाहिए। ये एक्सेप्शन 2 है, 375 सेक्शन 375 आईपीसी एक्सेप्शन 2। इसमें इसको रेप नहीं कहते ये लोग। अब जिस पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में, तो इसको रेप का वो लाना चाह रहे हैं, क्रिमिनलाइज करना चाह रहे हैं। तो अगर मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कंसेंट नहीं है वाइफ की, तो इट शुड अमाउंट टू रेप। बाकी आकर्ष का अलग टेक होगा इसमें। I have a somewhat partly similar view in this case. Because marital rape, see, you are married, and understand that one should not, beyond, there are sexual needs that should be performed, I believe, but beyond that, beyond the consent, like Harsh said, see, there is a possibility that that the husband is drunk, he wants to pursue in that manner. What if the wife is not, she does not want to do it, she is ill, possibly she does not want to do it at that time. Now if they are out of this out of the purview of marriage, it would amount to rape. But now we have covered it with marriage, we cannot call it rape. So though the term rape, there are provisions and there are things which are very strict, it may cause a lot of false cases. Like I said, domestic violence cases, the first question that was, how do we know whether the complaint is right or not? So how do we know whether this or not? Because they are husband and wife, they are possibly they are in a sexual relationship on a regular basis. And what if someday the wife goes to the police station, have a medical done, and says that no, he has raped me? Now he'll say, no, that was 2 days back, that was 2 days back, that was 1 day back, and I was we are married. So I hope you understand that I cannot cross the lines in between in the seminar, but I believe that it should be taken in a very sensitive manner. There has to be some very strict provisions with respect to how the complaints can be, how to conduct those complaints, how to pursue investigation on those complaints. And I believe that criminality, it should also be taken in a pseudo criminal way and in not a criminal way, because it is very difficult to ensure that whether it was a consensual sex or rape, whether it is a rightful or a complaint having truth or not. So this is my take. Well, let's see what the Honorable Supreme Court and Honorable other High Court now have view on this. Thank you so much, sir. I hope this would have convinced Anshul as well. So our next question is from Suraj. He's asking, how effective is mediation and out-of-court redressal through means of mediation committees, considering the burden of cases in our courts? Very much. Mediation is so effective. It ever since the mediation has come and ever since Lok Adalat has come, the burden on the courts indeed has lessened, has decreased. And there are cases where the mediation somewhat is not possible, or the husband or the wife, or in any other case between the dispute between the families for properties, mediation is not successful, turns out to be does not successful. But at least they are trying for reconciliation.
They are trying to talk it out, which is the very essence, very outside the judiciary is very important. So even if 1 out of 10 cases successful, it decreases the burden on the judiciary. NALSA, state legal service authorities, district legal service authorities, they are all, you know, taking their part, spreading awareness, telling people to go to mediation centers and lok adalat. That is for that reason. Yes, they have decreased the burden in a very high extent, if I can say so. Thank you so much, sir. Sir, another question is that affordable legal aid is the need of the hour. So how can the legal system in India cater to this? Affordable Legal aid for poor people. Can you repeat your question? I'm so sorry. Yes, sir. So the question is, affordable legal aid is the need of the hour for the poor people. Yes. So how we can cater this? Like I said, there are very many lawyers who are willing to help these people. There are very many organizations jointly with the state government and the central government as well. There is NALSA, there is then again district legal service and state legal service authorities. There are women's cells. There are cells for laborers who who are oppressed by the management. So I believe there are a lot of places where one can go and seek free legal services. But then again, there is an apprehension that if it is free, then what if it is not that effective? There are instances in front of me before the court, High Court and Supreme Court, they appoint amicus curiae. There's a provision in district courts, in sessions courts, that if you do not have any advocate, the court will provide you the advocate. Then again, the apprehension is advocate is free, and free things are, though free, but they may not be good and may not be effective. So provisions are there. You will get free legal services. Even at the end, if you do not have anything on your say, the judge will not decree against you. The judge will peruse all the material, all the record. Even if you are not saying anything, justice will not be denied like that. It is not like you are submitting something, the other party is submitting something, your advocate does not speak, and the judge will rule against you. No. Judge has a duty to the constitution, to the citizens of the India, for a better society, for a better world. So legal services, if I can say so, there are very many advocates, like I said, one could approach them. And yes, go to the magistrates, seek help from these organizations. अब बिल्कुल ही कोई हेल्प नहीं मिल रही है और कोई चारा नहीं है, तो कोर्ट अल्टीमेटली आपको हेल्प करता है. आप कोर्ट के आगे एक एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमारी कोई वकील सहायता नहीं कर रहा है, तो करेगा. अब ये वैसी ही बात है कि किसी को फ्री मिल गया, वो कह रहे हैं कि नहीं हमें फ्री नहीं चाहिए, तो आप पैसे खर्च करिए, तो फिर वो कम में कैसे होगा? मैं समझता हूं कि लीगल एडवाइस बहुत महंगी है आजकल, और केस लड़ने के लिए काफी पैसा लेते हैं एडवोकेट्स. बड़े शहरों में ज्यादा लेते हैं, छोटे शहरों में कम लेते हैं. बट ऐसा नहीं है. ऐसे बहुत वकील हैं जो फ्री में काम कर रहे हैं, जो बिना पैसे लिए काम कर रहे हैं. और बस ये है कि क्या आपको अपनी सहायता खुद करनी है या नहीं, क्या आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं. अगर आप चाहते हैं तो आप अगर आगे जाएंगे तो आपको जरूर हेल्प मिलेगी, सरकार से हेल्प मिलेगी आपको. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस यूयू ललित, ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नालसा का इतना बड़ा एफर्ट चल रहा है गांव गांव में जाने का, फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड कराने का. तो अगर किसी गांव को और किसी भी व्यक्ति को उस गांव में रहते हैं, उनको लीगल सर्विस चाहिए, तो अगर उनको चाहिए तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं. बट अगर वो नहीं कर रहे हैं इस चीज को, जो कि आजकल चल रहा है, बहुत सालों से मैं मानता हूं कि लीगल सर्विसेज सेल जो था हमारा थोड़ा ठंडा पड़ा था, बट पिछले 2 साल से, क्योंकि कोविड के बीच में डोमेस्टिक वायलेंस के केस बढ़ गए और काफी सारी समस्याएं, प्रॉपर्टी के विवाद बढ़ गए,
इस वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें आई और लीगल सर्विस ने लेकिन अपना काम काफी बेखूबी से करा है। अगर मैं कह सकता हूँ इस बात को, तो आपका थिंकिंग ये होनी चाहिए कि आपको कैसे सर्विस लेनी है वो, क्योंकि सरकार प्रोवाइड करा रहा है, बहुत जोर शोर से करा रहा है, और सरकार को बहुत प्राउड है कि वो फ्री में लोगों की मदद कर रहा है। तो और चाह रहा है कि जितने लोग आए उतने लोगों की मदद हो पाए, उनको रिकॉर्ड बनाना है। तो आप चाहते हैं अगर आप चाहते हैं तो आपको मदद मिलेगी। बहुत एनजीओ ऐसी हैं जहां से आपको मदद मिल सकती है। सॉरी टू इंटरप्ट यू आकाश, मतलब सही। बाकी आधा काम आप लोग का है। उन्नत भारत अभियान जो है, यही अवेयरनेस क्रिएट कर सकती है अलग अलग रूरल एरियाज में जाके, अर्बन एरियाज में। हम तो अपना बता देंगे, लीगल सर्विस अथॉरिटी अपना काम कर रही है। अवेयरनेस आपको बताना पड़ेगा लोगों को, बता जाके। एंड आई अप्रिशिएट दैट, वेरी थैंकफुल टू यू गाइस कि आप लोग ये काम कर रहे हैं। इसमें मैं कहूंगी हर्ष और आकाश आप लोगों से कि कभी हम विलेजेस में ना, हम एक ग्रुप्स बना के वहाँ आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप लोग वहाँ पर जाके और पर्सनली कुछ अवेयरनेस जनरेट कर पाए हम। श्योर क्योंकि श्योर, यहाँ मेरी पर साइड से। ऑनलाइन में बहुत कम लोग जुड़ पाए हैं हाँ जी, हाँ जी विलेजेस मैम। से। तो अगर हम 2 विलेजेस या कोई ऐसा करके एक बड़ा ग्रुप बना के अगर वहां पर अगर एक ऑफलाइन अगर हम कर पाए तो दैट वुड बी गुड, आई थिंक। श्योर मैम, श्योर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हम बिल्कुल एक ऐसा अरेंज करते हैं, स्केड्यूल करेंगे और कोशिश करते हैं कि लोगों की और सहायता हो पाए। बिल्कुल मैम, थैंक यू, बिल्कुल। थैंक हम यू। आप हैं अपनी तरफ से मैम, बिल्कुल जितना नॉलेज है हम सब करेंगे मैम। थैंक यू मैम। Thank you so much, sir, for answering our questions. Due to time constraints, we will not be able to take any more questions. We are again thankful to you for sparing your precious time and enlightening our students with your golden words. We are indeed thankful to you. थैंक यू सो Now, मच। I would like to request each of you to kindly fill in the feedback forms and follow all the social media handles of UBSL for future updates. The link for the same has been posted in the chat box. In the smooth initiation and conduction of this program, many people have contributed in terms of their efforts and time. To express her heartfelt gratitude towards all those, our respected guest speaker, teacher coordinators, I would like to welcome Nandita to propose a vote of thanks. Over to you, Nandita. Am I audible, Prasoon? Yes, you are audible. A very good afternoon to the one and all present here. It is an honor for me to get the opportunity to thank you all dignitaries. On behalf of our whole unit, I, Nandita Haripal, the media head of UBA unit Deshbandhu College, would like to express my gratitude to all esteemed delegates of the webinar for their presence and contribution to make this webinar a great success. I extend my gratitude to our Honorable Principal, Professor Rajiv Agarwal sir, for always supporting and motivating us. I would like to extend my heartiest thanks to our honorable guest speakers, Advocate Harsh Singh and Advocate Akash Sharma, for taking out time from their busy schedule to grace the event. And thank you so much for guiding us towards legal awareness with such informative and valuable words. I extend my gratitude to the convener of UBA Deshbandhu College, respected Dr. Varsa Bhaveja ma'am, and all the teacher coordinators, Dr. Ruby Mishra ma'am, Dr. Ashwini sir, Shrashti ma'am, and Rahul sir, for always leading us towards the right path. Further, a big thank you to the host of this event, Prasoon, for hosting it so diligently. Now, I would like to thank to the student coordinators Sachin Kumar Jha and Sakshi Khatri for leading the team so appreciably. I must thank to all the volunteers for always working so hard. I thank to all the participants for their active participation. Thank you everyone once again for making it a great success. Thank you. Over to you, Prasoon. Thank you so much, Nandita. Now, to give a peaceful end to this wonderful session, I would like to request Anshul to chant Kalyan Mantra. Over to you, Anshul. Am I audible, Prasoon? Yes, you are audible. Om sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukh bhag bhave. Om shanti
शांतिः शांतिः. Thank you so much, Anshul. Now, I would like to urge all of you to switch on your videos so that we can capture the glimpses of this moment in our hearts. I would like to rest my voice by quoting Martin Luther King Jr. He says, "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere." We are caught in an inescapable network of mutuality, tied in a single garment of destiny. Whatever affects one directly affects all indirectly. I once again express my regards to all those who joined us. I hope you will be joining our future events as well. Now, I kindly request the host to end this meet. Thank you all. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, everyone. Thank you.